Hello everyone and welcome you all to EIG Pathshala, and this is our second session in terms of coding. Otherwise, this is the fourth session in Python. And so first of all, what we are going to do, we are going to take a brief look at what we have discussed in the last session. That's just a review I am going to give you so that you can have an understanding, and then we will start ahead. So in a 3 to 5 minutes, I'm going to give you a basic review of the last session. So hello, please keep yourself in the mute mode, and whenever you need to speak, then unmute yourself and speak so that your background noise will not affect our discussion. So see, first of all, what I have discussed, we have started with syntax and semantics. And inside this syntax, we have understood first of all, we have covered this indentation part. In the indentation, we have learned we have to give the 4 indentation space to write a program. This is our 4 indentation space. Fine. So if we look at this conditional statement, I have told you that here, for starting each block of code, we need an indentation. So this is my first block of code. If you see, this is my first block of code. And inside this block of code, I have another block of code. Fine. So when I am writing my first block of code, I have given the indentation here. Thereafter, inside this block of code, I have written another block of code. That's why there is an indentation here. So this is what we have discussed. This is again another block of code. So I have one indentation here. This is again my another block of code. So whenever we start a new block or a block inside a block, that is called a nested block, then we give indentation. This we have discussed. Fine. And let's erase this. Thereafter, what we have discussed, semantics. So this is a statement, and this is my expression that we have discussed. And inside this, thereafter, we have discussed variables and data types. So what variables we have discussed? We have discussed basically about how we can write a variables. So there are certain rules for writing the variables, like variable naming. So what are the first thing was that variables must start with a letter or underscore. So you can see here I'm starting my variable name with a letter, and here I'm starting my variable name with an underscore. So this is correct way of writing the variable's name. And likewise, there are certain other rules of variables writing. One rule was that variable cannot start with a number. So if we start the variable by the number, this is invalid. We cannot write it. If we can write, we get a syntax error. Thereafter, we have told that variable can contain only alphanumeric characters and underscore. So this is my characters. This is my 1 to letters. Alphanumeric means it can contain A to Z or 1 to 0 to 9 or underscore. Apart from this, variables should not contain anything. It cannot contain any special character. Right? Say if you write dollar symbol or something like this or something like this, these are not valid. So you will get an error. That's we have discussed. And we have seen also here we have used this symbol dash. So we got error. Fine. Moving ahead, we have discussed this thing that variables are case sensitive. What it means case sensitive? Case sensitive means this and this variable. Capital letters. All these. Here we have capital, here we have small. Thereafter, we have learned about the assignment operators. This is assignment operators, and double equal to, single equal to is my assignment operator, and double equal to is my equal to operator in Python. This is, and thereafter, we have started with the data types, and we have learned mainly about some basic data types. That is integers. This is my integer data type. This is my float data type.
And if we have check the type of, this is a function, type is a inbuilt function in Python, which gives us the type of data it is. Thereafter, float is also called the decimal numbers. Thereafter, we have a string data types, whatever. A string means text data or character data. Fine. And lastly, we have a Boolean data, true and false data. Till here, we have discussed, and also we have discussed the list, composite data types. Inside the list, we have talked about these things. So, what I'm doing, I'm starting from the list because one of the guys has told me he is not able to understand the list. So I will be from today, I will be starting from the list data type. Fine. That is the composite data type. So let's start and start coding along with me. See, Sir, can shall I start with a fresh page or the it- previous one only? it's your wish, whatever you Okay. want. Because I'm Okay. why I'm starting with a fresh space, because so that there is a segregation of what I have done in the first day, what I am doing second day, what I will be doing in the third day. That's why. Otherwise, it's fine. Whatever you do, you can continue doing on the same pace, or you can create a new pace. Whatever it's your base. There is no such hard and fast rule in that. Fine. So there are certain type of data which is called composite data type. Composite data type. Why we are calling it composite data type? Because it is a mixture of uh, the other kind of data. Fine. So in the composite data types, the first type of data is list, list list. And there are certain properties of list. What are the properties of list? It is a ordered, comma, mutable, and it is a collection of ordered, mutable, and it is a collection of items. Collection of items. So what does it means? We will understand this with the help of an example. So I am taking the last example that we have taken, my underscore list. If I create, this is a way to create a list. First of all, for creating a list, we need to put this square bracket. And inside this square bracket, whatever items I need to put it, and put a comma after that. Let's say these are some items that I am putting here. Fine. And I am some, let's write Lokesh is my string, then write some Lokesh is uh, 22.56. This is one thing. And let's say one type of utter true, like put some Boolean data also. So what you can see here, list is a collection of different collection of items. It is a collection of items. And inside the list, you can see the items that are present are of different data types. If you can see these three items, these are my integer data type. This is my string data type. This is my float data type, and this is my Boolean data type. So inside a list, there is a collection. List can be a collection of any data type. So if you look at the, I have discussed in the last session also, if you look at the other programming language, there is a concept of array. There is not a concept of list. So what is the difference between array and list is that, let me say you, array is basically a collection of similar data types. Collection of same data types. What it means? If let's say this is, if I write this is array 1, so array 1 can be like 1, 2, 3, 4, 5. That means here we are not able to put any other type of data except the integer data. It can be a collection of only one type of data. If let's say I'm writing second data as array 2, so here if I'm putting only string values, I'm writing my name Anu, then I'm writing AI, and I'm writing anything else.
So this can be a collection of only a string type of data. No other data. Array means collection of same type of data. But the concept of array is not inside a core Python. Although we will study array in Python also. There is one module of Python called NumPy, which is called numerical Python. This NumPy is called numerical Python. So there we can learn the concept of array, numerical Python. But inside the core Python, there is no array. So this is, I suppose, clear to you now. Second thing that I have told you here is that it is an ordered. What it means to be ordered. First, let's understand ordered. We have understood it is a collection of items because see, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 items and all of them are separated by comma. And the items have different data types. So it's not mandatory to have the same type of data. It can have a same type of data. It may or may not have the same type of data. This is all. Now, second thing we have told that it is a ordered. What it means to be ordered? The meaning of ordered means it can be indexed. It can be indexed. So what it means to be indexed? Are you facing the lag? Because fine. So how can we index any data? We can index like this. See, we always indexing starts from 0. So this is my 0th index. This is my first index. This is my second index. This is my third index. This is my 4th index. And this is my 5th index. So since list can be ordered, since list can be indexed, that's why it is called ordered. Because you can see we can order it in a particular way. That's why it is called ordered. So first thing is ordered. Second thing is collection of items. And third thing is mutable. What it means to be mutable? Mutable means can be changed. Can be changed. So we can change the item inside the list. That's why it is called mutable. Now let's do one by thing. I want to access the elements of a list. Since it is an order, so it is having a particular location or particular index value. So we can able to access my list, any data inside a list with the help of the index position. Let's say this is a list and I want to access what is present inside the index 3. So we can write here 3 and thereafter, if I will run this, I will get, let's yes, Divya, please tell me. Sir, can you please just repeat this mutable part? Actually, there is a network issue going on my side. I tried. Okay, I'm telling you. See what it means to be mutable. Let's see what means mutable. I have told you that list is a mutable means the item inside this list, these are the items inside the list, it can be changed. That means it is mutable. If the value inside a particular list can be changed, that means it is, if the item, you can assign a new item in place of a present item, that means it is mutable. Mutable means it can be changed. We will see with the help of example. Fine. So here what I was doing, I'm trying to access a value at my index value of 3. So I got location. This is the value that I got. Fine. Let's access another value, my underscore, let's say list. And let's try to access the value at index 5. So you can see at index 5, what is my value at index 5? Can anyone say? True. True. So if I will run this, I will get true because at index 5, I have true. Likewise, you can able to access any value at any particular index. So I suppose this is clear. Now, see one thing.
How we can modify? This is called, what I have told you here, it's a mutable. Mutable means the items can be modified. How you can modify the item? Let's say, instead of this my underscore list, at the zeroth index, what is the value that is present at the zeroth index? Zeroth index 23 is present. Now I want to replace that value with some other value. Let's say I want to replace 23 with Rahul. So I have assigned one string here, Rahul. And when I run this, it's got run. Now I want to see what is present now and in my list. Can you see at zeroth index, earlier 23 was there. Now at zeroth index, Rahul is present. What it means? The value can be changed. This is what it means to be mutable. Have you understood, Divya? Divya? Yes, sir. Yes, I understood it. So list is ordered So mutable. it's just like when we have to, you have said that my underscore list and the index number like 3, it is location. So if we want to just review it, we'll do just my underscore list on, we'll in the brackets, we'll just write the index number. And if we want to just replace that, if we want to just replace our index number value with other value, we'll use equal sign with apostrophe with the value we have to change with the other one. Correct. You are correct. You got the point. Fine. Now, after list, there is another data type that is called tuple. So let me write this tuple. Fine. So I will be explaining you tuple with the help of example only. So first of all, this is tuple is ordered immutable collection of items. COLLECTION collection of items. Fine. So now, like list, let me write my underscore tuple, TUPLE tuple. This is my variable. And I'm taking this value only. Let's take this value only. So I'm copying this value from here and I'm assigning it to tuple. Only thing that I'm changing here, when I was creating the list, I was using this square bracket, but in the tuple, you need to use this parenthesis. Can you see this parenthesis? So this is the representation of tuple. Tuple are also ordered collection of items. That means inside the tuple, data type can be either same or different data types. It is also a collection, since it is a collection of items, so data types can be either same or different. So here I have written different types of data inside the tuple. Fine. And tuple is ordered. Ordered means it can be indexed. What it means to be indexed? If I will index here, this is my zeroth index, this is my first index, this is my second index, this is third index, this is fourth index, and this is my fifth index. Everything till here is same what we have studied in the list, except this representation of parentheses. Now, the major difference between the list and the tuple is that this list we have studied, this is a mutable. This is immutable. Cannot be changed. So let's see this. First of all, what we are going to do first. Yes, sir. Please tell me, sir. So means it is a kind of constant value, huh?
No, you cannot say it's a constant value. If we can't change it, then this is a constant. I think so. Yes, constant value, you can say that the items inside the list cannot be changed. Correct. You can say not, we can say a constant value, but we can say like that. The items present inside the list cannot be changed directly. We are not, so that's why where there is a requirement is such that we put something in it so that people are not able to change its value, then we put it in tuple. Fine. So we will Okay. understand how it is working in the same way. Let's say like list, if you want to see what are the item present inside a particular index, because this can also be index. So let's say I want to see the item present inside second index. So like I have run this. Okay. Actually, I have not run this. That's why I was getting this error. So now if I run this, so I can see at second index 0, 1 and 2, second index I am getting 21. Fine. Likewise, you can check for any So given, why 21 in the second index? Yes, it is 26, right? as I have told you, the indexing starts from 0. This is my 0th index. Okay, okay. Yeah, yeah. Fine. So indexing always starts from 0. That's why. And if let's say here I am writing 4, so what I will get at the fourth index, this is my value, so I'm getting. Now, you have seen we have easily changed here. I have assigned in the list, I have assigned in place of 23, I have assigned the value Rahul, and here the value get changed and I'm getting this fresh list. Now let's try to change the value of tuple. So let's say inside this variable, inside the second index, I want to put something else. Let's place AI. And let's try to run this and see what I'm getting. If you can see, I'm getting a type error. It is saying tuple object does not support item assignment. Did you get my point? That's why tuple is called immutable, because we cannot, once a value is assigned, we are not able to change it. We are not able to change the value inside the tuple. Fine. Now let's say we have already seen tuple. Now the next type of data type is like say next data type is dictionaries. So see, tuples are like unchangeable contracts. If you sign that contract once, you are not able to change it. Although there is some way to change the value of tuple also, that we will discuss it later. Yes, sir. Please tell me. Yes, sir. Please tell me, Hirak, sir. I did not raise my hand. No, your hand is raised. Still, your hand is raised. Oh, I did not. Lower hand, I did not do. I Okay, think. okay. Not an issue. So the next type of data is Sorry. a dictionary. So what does this dictionary means? So first let's understand this dictionary. This is called unordered collection of key value pairs. Key value pairs. Now, let's first see how can we create a dictionary. Likewise, we have created the other type of data. So I am writing one variable here for creating the dictionary, my underscore dict. This is my variable. And dictionary is, we start writing things inside the dictionary, inside this curly braces. So this is important. Whatever item we are putting inside a curly braces. So let's write, I'm writing name as my first variable, and
let's name as Divya. Divya, Divya. Fine. Thereafter, let's put the another variable I'm writing. This variable, let's put it string variable age. And I'm writing the age as, let's say, 21. Thereafter, I'm writing comma and I'm writing a third variable. Let's write third variable as the city. Fine. And this is also my string, so I'm putting city. And inside it, I'm writing Delhi. Delhi. Fine. So this is my third thing. Fine. Now, with the help of, so I have created this mydict. Let's run this. And now let's understand what I mean to say. First thing, what I have told you, list is a unordered collection. Unordered means what does unordered means? We cannot index it. We cannot index it. Likewise, we are indexing our data in case of list and tuple. We are not able to index this in case of dictionary. First. Second thing, what I have told you, this is a collection of key value pairs. That means the items that is present inside the list is in the form of key and value. So this is my first item. If you look, this is my first item. This is my second item. And this is my third item. Likewise, any number of items can be present inside my list. Now, if you look at the first item, and all the items, 3 items are separated by this comma. Can you see this comma? And all these three things are present inside this curly braces because items can only be present inside the curly braces inside a dictionary. After that, the items are in the form of key value. So this is called key and this is called value. That means inside the item, the first thing is key. Thereafter, I am putting this colon and thereafter I am assigning, there is a value present, the key value, that is whatever value associated with this key is present. So first key is my name and the value associated with the name is div. Second, now inside the second item, my key is age is my key and the value associated with the age is this 21. So this is my value. Now third item is this is my key and this is my value associated with my key. So this is how dictionaries are formed, or this is how dictionary can be represented. Now, thing is that how can you access the value inside the dictionary? So let's see this. So let's say this is my dictionary, my underscore dict, and I want to access anything inside inside my dictionary. So for that, I have to give the key present in that dictionary. When we put the key, we will get the value associated with that key. Let's say I want to access this name. What is the name? What is the value associated with this key name inside this dictionary? So if I put it, I will get the value div because the value of this key is div. Similarly, let's say if you want to put age, you will get the age. Let's say age. I'm putting age here. So let's put capital here, uppercase, you will get 21. So you have seen how you can assign the, sorry, not assign, how you can access any key present inside the dictionary. Now, let's try to do one thing. Try to access this dictionary with the help of
value. If you try to access this with the help of value, let's say I'm putting this value div, you will get an error. What you will see? You are getting an error, mydict div, this is the thing, this is the error. So you are not able to access the dictionary with the help of value. You are able to access the dictionary with the help of key only. This is clear. Now, you can also assign the, are you guys, someone please, okay. Now, you can also assign a key inside the dictionary. You can replace a key with another key. So let's do one thing. I want to modify this dictionary. Modifying dictionary. DICTIONARY. And let's do one thing. I want to modify my underscore dict, and I want to change, let's say, the age. This thing age. And what was my earlier age? Earlier age is 21. And I want to put here, let's say, 52. So what will happen? If I run this code, and then again, if I check my dictionary, my underscore dict, and see my key value pair, can you see my value get updated? Because for this key, I have assigned a new value 52, and this new value get updated. So I suppose the concept of key value pairs is clear to you. Now, is there any doubt still here? No. Then, yes, sir, please tell me, sir. So the dictionary actually this is the mutable, but it is unordered mutable. Yes, this is unordered mutable. Unordered. If I change the location of name from first to third one, is there any impact onto this? Doesn't impact? It doesn't impact because it's an unordered. Unordered, okay. So that's why it doesn't impact anything. So any position, at any position name can be there, and we want to access it, we can access it with the key name. Correct. Correct, sir. Okay, sir. Right. Now, the fourth, the another type of data, composite data, is called set. Likewise, this is what set means. This is an unordered collection of unique items. Unique items. Fine. So what does it means? Unique items. Let's first create a dictionary. Sorry, let's first create a set. So this is a variable called my underscore set. And this is set is also represented inside this curly bracket. Now inside this set, let's put some value 1, 2, 3, 3, 7, 9, 7, 9, 9. So this is, let's say, my set I have created. Let's run this set. Fine. If I run my set, and let's access my underscore set. Can you see what I am getting? See, initially when I tried to create, I have not yet created. This is? It is a distinct values it is giving. Correct. So, can you see here 1 is there, but 2 is there, 3 is occurring twice. 1, 2. 9 is occurring thrice. 1, 2, 3. 7 is occurring twice. 1, 2. But after you created it, only you get a distinct value.
that is values are not repeating. Can you see? Every value is a distinct value. So that's why I have written here, it's an unordered. Unordered means cannot be indexed, cannot be indexed. Fine. And second thing is unique items. That means items are not repeated. Items are not repeated. So only distinct items can be present. That's why after creating it, you are getting the unique value here. Fine. This is about the set. Now you can add, let's say this is my set and I want to add some other thing inside my set. Let's write my underscore set dot add is one function that we can use, and let's add some value inside it. Let's write arth, EARTH. Fine. And let's run this. After that, let's check what is present inside my set. Can you see my earth get added? This is a function which we use to add any distinct value inside this set. But let's say now if I try to add this thing, my set dot add, and let's say I try to add 2 here. So still I'm not getting any error, but if you will access it, you will get only 1. Can you see? Fine. So this is all about set. And let's say if you want to see the data type of it, because we have not yet seen the data type. So if I want to see, let's print it so that you can see the, and let's say my underscore set. So what you will get? If I just run this code, I'm getting the class as set. That means this is a class of data which belongs to the set class. Likewise, we can also see dictionary. Sir? Yes. Sir, can you please Hmm? Sir, can you please just scroll it up on the web page? Actually, I want to just look over it. This? Uh, that earth one, that my underscore data set thing. Okay. Yeah, then I have written it right. Okay, sir. Okay, I have written it right. I thought I have. Yes, sir. Lokesh, are you understanding? अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दो, मैं हिंदी में ही बोलूंगा ऐसा, या मिक्स रखूंगा। अगर आपको किसी को दिक्कत है, राहुल, लोकेश और भी जो लोग हैं, राकेश, तो आप लोग बता दो। राहुल, लोकेश, आपको समझ आ रहा है? या और राहुल, आपको समझ आ रहा है? समझ पा रहे हैं आप? सर एक चीज है यहाँ पे, आपने माय अंडरस्कोर सेट एट टू यहाँ पे क्यों आया है? बिकॉज उसका तो कोई यहाँ पे मेरे को वो दिख नहीं रहा ना कि आउटपुट यहाँ पे। मैंने ये बताया कि अगर आप माई अंडरस्कोर सेट के अंदर ऑलरेडी 2 ये प्रेजेंट है, करेक्ट, मैं यस, वापस से इसमें ऐड कर रहा हूं 2, तो ये मुझे कोई एरर नहीं दे रहा है। बट अगर मैं so इसको, something which is out of the box that will give me an error like 10, 12. क्या? Something which is out of the box that will just give me the error just like 10, 12 if I write at 10, at 12. नो नहीं, ये दैट विल नॉट गिव यू एन एरर, दैट विल ऐड दिस वैल्यू इनसाइड इट। ये मैं Okay, वैल्यू ऐड कर रहा हूं इसके अंदर, okay, सेट के अंदर मैं ये 2 ऐड कर रहा हूं, तो बट 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है इसके अंदर, तो ये ऐड नहीं करेगा, क्योंकि इट्स सेट इज ए कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। फाइन। okay, sir. अगर मैं यहां लेट से इसके जगह मैं यहां 10 ऐड कर देता हूं या 12 ऐड कर देता हूं, तो ये ऐड होगा।
क्योंकि दिस इज नॉट प्रेजेंट इन साइड इट, दैट्स वाई। अब इसको अगर आप रन करोगे तो यहाँ आपको 12 दिखेगा, ओके 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 बट ये ओके। ऑलरेडी प्रेजेंट है टू एक बार, तो ये दोबारा उसको नहीं ऐड करेगा बिकॉज इट्स ए अच्छा यूनिक। ओके, यहाँ समझ गया समझ गया। ऑलरेडी एडेड है, जो हमारा ऑलरेडी एडेड है वो तो इसमें आज नहीं आएगा, करेक्ट लेकिन करेक्ट ना वो। करेक्ट। ये हमारा क्या है, ये सेट, मैंने डेटा टाइप चेक किया तो ये हमारा टाइप, ये सेट सेट का आ रहा है। लेट्स चेंज इट टू माय डिक्ट। अनूप सर, जो नया हमने ऐड करा है न्यूमेरिक डिजिट, उसका इंडेक्स कैसे डिसाइड हुआ है? कौन सा नया? जैसे जैसे हमने 12 ऐड किया या कुछ भी ऐड किया, तो सिस्टम ने उसको फर्स्ट इंडेक्स ही क्यों लिया? मतलब इंडेक्स कैसे डिसाइड हुआ? मैं बताता हूं आपको। हम लोगों ने सबसे पहले क्या बात किया है सेट के ऊपर, कि इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। मतलब अनऑर्डर्ड है, अगर ये अनऑर्डर्ड है तो इसकी इंडेक्सिंग नहीं हो सकती, कैन नॉट बी इंडेक्स्ड। सिंस इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन, इट कैन नॉट बी इंडेक्स्ड। ये बात आपको समझ में आ गया? अब अगर ये इंडेक्स नहीं हो सकता है, डेट मीन्स कि इसका कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं है, ये अनऑर्डर्ड है। मैं इसको अगर अभी दोबारा रन करूंगा तो ये अपने आप कोई भी पोजीशन पकड़ लेगा, क्योंकि ये अनइंडेक्स, मतलब इसका कोई इंडेक्सिंग है नहीं, अनऑर्डर्ड है। सिंस इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स, इसको आप जितनी बार रन करोगे उतनी बार ये डिफरेंट कुछ न कुछ इंडेक्स, मतलब इंडेक्स नहीं कह सकते क्योंकि इंडेक्स तो है ही नहीं ना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यस यस, करेक्ट। सिंस इसका इंडेक्स नहीं है तो ये कुछ भी अपने हिसाब से पकड़ लेगा, एंड दैट इज नॉट एन इंडेक्स। कोई भी पोजीशन पकड़ लेगा, वी डोंट नो, हमको पता नहीं है। ठीक है, ये समझ में आता है सर? तो हमने माइडिक का क्लास चेक किया, टाइप चेक किया, तो हमारे को आ गया ये इसका क्लास क्या है, टिक्ट क्लास है। ठीक है, अब इसके बाद सेट में बस आपको ये याद रखना है कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकता है। मैं यहां लिख देता हूं, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स मींस नो डुप्लीकेट प्रेजेंट, नो डुप्लीकेट वैल्यू कैन बी देयर। समझ में आ गया? इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट चीज, तो ये हम लोग ने डेटा टाइप कंप्लीट कर लिया अभी, बेसिक डेटा टाइप एंड कंपोजिट डेटा टाइप। बट ये अभी हमारा फिनिश नहीं हुआ है कि हम डेटा टाइप के ऊपर आगे बहुत सारा और डिस्कशंस करने वाले हैं, जिसमें हम सिर्फ लेट से एक लिस्ट के ऊपर हम कंप्लीट एक सेशंस लेंगे, डिक्शनरी के ऊपर अच्छा खासा अभी बहुत कुछ डिस्कशन करेंगे। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ आइडिया, क्योंकि अभी हमको ताकि समझने में चीजों को सवालियत होगा, हम धीरे धीरे अपने लेवल्स को इम्प्रूव करेंगे। नाउ अब मैं बात करता हूं, बहुत बेसिक बेसिक चीजों की बात करता हूं मैं। पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक, BASIC, बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस। फाइन, इनपुट एंड आउटपुट। बेसिक इनपुट आउटपुट का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सी मतलब होता है, अगर मुझे कुछ प्रिंट कराना है, तो आप लोग अभी तक जान चुके हैं कि प्रिंट कराने के लिए ये एक इनबिल्ट फंक्शन होता है प्रिंट, उसके अंदर हम लिखते हैं तो वो चीजें हमारा प्रिंट हो जाता है। लेट से अगर मैं 22 प्रिंट कराना चाह रहा हूं तो प्रिंट, उसके अंदर मैं 22 लिखूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं कोई स्ट्रिंग लिखना चाह रहा हूं, लेट से स्ट्रिंग का वैल्यू मैं गौरव लिख देता हूं, गौरव, और मैं इसको प्रिंट कराना चाह रहा हूं तो प्रिंट गौरव लिखूंगा और रन करूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट का क्या काम होता है? it prints whatever you want to print, it will print it to the console। ये आपको दिखाता है कि हाँ ये चीज है, इसका वैल्यू, प्रिंट का काम है डिस्प्ले करना। ठीक है, आपको वैल्यू को डिस्प्ले करता है। ठीक है, ये तो सिंपल सा फंक्शन हो गया। इट विल डिस्प्ले योर आउटपुट डेटा, प्रिंट विल डिस्प्ले योर आउटपुट डेटा, इट विल नॉट गिव यू आउटपुट, इट विल डिस्प्ले योर आउटपुट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकेंड फंक्शन हम लोग
बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इनपुट फंक्शन। अब इनपुट फंक्शन का क्या काम? इनपुट फंक्शन का काम होता है, वी यूज इनपुट फंक्शन टू टेक इनपुट डेटा फ्रॉम द यूजर। Input data from the user. We use input to input function. We can write input and function. This is also an inbuilt function to get input from the user. Fine. अब इसका एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, दिस दी इनपुट फंक्शन। अभी मैं समझाता हूं आपको। मैं ये इसलिए सीट में ऐसे लिखता हुआ चल रहा हूं कि कल जब मैं आपको ये सीट देता हूं तो आप जब इसको रिवाइज करोगे तो आपके पास ये सारी चीजें लिखा रहेगा, तो बड़ा इजीली आप चीजों को कोरिलेट कर पाओगे। इसमें मेरा टाइम थोड़ा ज्यादा जा रहा है, बट डेफिनेटली ये आपके लिए ज्यादा यूजफुल है, इसीलिए मैं इस तरह से चीजों को लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे। करेक्ट? तो ये आपके लिए ठीक है या मैं ना लिखूं? आप बताओ, कोई फीडबैक? मिस्टर लोकेश आप बताओ। No, it's fine. तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, विल ऑलवेज रिटर्न्स स्ट्रिंग एज आउटपुट। अब इसको हम लोग समझते हैं इसका क्या मतलब है। पहले हम लोग इनपुट फंक्शन कैसे यूज करते हैं उसको देखते हैं। लेट्स से कि मैंने लिखा इनपुट, दिस इज योर फंक्शन, और उसके अंदर मैंने कुछ चीज लिख दिया, इंटर योर नेम, ऐसा मैंने इनपुट लिखा। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या देगा मुझे, यहां पे ये मुझे कह रहा है इंटर योर नेम, तो मैं अपना नाम डाल देता हूं अनूप। आप लोग अपना नाम डाल दीजिए और एंटर करता हूं, तो मुझे ये आउटपुट मिल जाता अनूप। करेक्ट? अब ये जो आउटपुट मिला है, इस आउटपुट को हम किसी वेरिएबल्स के अंदर सेव भी कर सकते हैं। लेट्स से ये मैं दोबारा से इनपुट लिख रहा हूं, इंटर योर नेम के जगह इंटर योर सिटी, इंटर योर सिटी, ये लिख रहा हूं। अब देखो आप, मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूं तो ये पूछ रहा है इंटर योर सिटी, तो मैं यहाँ पे सिटी का नाम दिल्ली लिख देता हूं, DLH, और प्रेस करता हूं एंटर की, तो यहां मुझे ये एंटर हो गया। अब ये जो इनपुट फंक्शन के अंदर मैंने ये क्या हुआ, जैसे ही मैं इनपुट फंक्शन यूज कर रहा हूं तो ये हमसे पूछ रहा है, मेरे को इनपुट डेटा मांग रहा है, और मैं जैसे उसमें इनपुट डेटा डाल के एंटर की प्रेस करता हूं तो वो फिर मुझे दिखाता है। अब मैं इस इनपुट डेटा को किसी वेरिएबल में सेव कर सकता हूं। ठीक है? तो लेट से मैं एक वेरिएबल लिया, इनपुट अंडरस्कोर नेम, ये एक मैं वेरिएबल है, उसमें मैं इस डेटा को सेव कर लिया। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो ये अब मेरा जो भी मैं इनपुट करूंगा, लेट से मैंने इनपुट किया दिल्ली, तो ये इस वेरिएबल में जाके सेव हो गया। अब अगर मैं इस वेरिएबल का टाइप देखना चाहूं, या लेट से इनपुट अंडरस्कोर नेम फिर से देख टाइप करके ये देखूं कि इसके अंदर क्या है, तो मुझे आ जाएगा दिल्ली। अब मैं इसका टाइप चेक करना चाहता हूं कि इसका डेटा टाइप क्या है, सो आई विल टाइप, मैं डेटा टाइप चेक करने के लिए इसमें इनपुट अंडरस्कोर नेम डालूंगा, और मैं यहाँ एंटर, यहाँ रन करूंगा तो मुझे इसका क्या वैल्यू आ गई, स्ट्रिंग। डेट मीन्स जो ये इनपुट डेटा है वो क्या है, स्ट्रिंग है। नाउ अगर मैं बोलूं कि इनपुट द मोबाइल नंबर, मैं एक दूसरा इनपुट फंक्शन यहां लिख रहा हूं, सिटी के जगह मैं लिख रहा हूं इनपुट अंडरस्कोर नेम के जगह इनपुट अंडरस्कोर लेट से मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, ये मेरा एक फंक्शन है, सॉरी वेरिएबल्स है, और मैं ये कह रहा हूं इंटर योर
मोबाइल नंबर। फाइन। अब अगर मैं इसको ये करूंगा और मान लो कि मैंने कुछ मोबाइल नंबर अपना डाल दिया है और मैंने एंटर कर दिया, तो अब मैं चेक करता हूं इनपुट मोबाइल नंबर, तो मुझे ये आ रहा है। अब मैं इसका टाइप चेक करता हूं, मोबाइल नंबर। तो अगर मैं इसका टाइप चेक करूं तो ये क्या है, स्ट्रिंग। अब यहां पे प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आपको ये चीज अभी बताने वाला हूं। ये क्या है, अगर आप देखोगे इसमें तो इनपुट मोबाइल नंबर के अंदर, इनपुट मोबाइल नंबर के अंदर आपने जो मोबाइल नंबर कुछ भी मैंने डाला 864455 वॉट एवर जो भी वैल्यू डाला, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है ना। तो अगर मैंने इंटीजर वैल्यू डाला है, फर्स्ट केस में जब मैं नेम डाल रहा था, सिटी डाल रहा था, तो वो एक मेरा टेक्स्ट वैल्यू, टेक्स्ट डेटा था, स्ट्रिंग डेटा था, तो ठीक था। अभी मैं, ये मेरा इंटीजर वैल्यू है, लेकिन जब मैं इसका टाइप चेक कर रहा हूं तो मुझे ये str स्ट्रिंग दिखा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो इनपुट फंक्शन है विल ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग एज आउटपुट। इसका मतलब ये है कि ये इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू ही आउटपुट दिखाएगा। आइदर यू पुट ए स्ट्रिंग वैल्यू और यू पुट ए एनी अदर टाइप ऑफ डेटा, इसको उससे फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप इंटीजर डेटा डालो, चाहे फ्लोट फ्लोट डेटा डालो, चाहे आप बूलियन डेटा डालो, इट विल ऑलवेज गिव यू आउटपुट एज ए स्ट्रिंग डेटा। दैट्स वाई इसका ऑल्दो हम लोगों ने इसमें इंटीजर डाला है, इंटीजर वैल्यू डाला है, लेकिन हम अगर इसका डेटा टाइप चेक कर रहे हैं तो हमें स्ट्रिंग मिल रहा है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? कैन आई गेट ए क्विक यस सर। और यस बस एक और? चीज है, ये जो हमारे मोबाइल नंबर हैं और ये सब कहाँ से आपने डाला है सर? ये मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या? कि मैं अपने उसमें, ये जो मोबाइल नंबर है आपने ये कहाँ से डाला है? बिकॉज आई एम जस्ट टाइपिंग इट ऑन माय कंप्यूटर एंड आई एम कंफ्यूज दैट मेरे को किधर ये लगाना है ये मोबाइल नंबर जिससे मेरा प्रिंट आउट और मेरा आउटपुट निकल जाए। देखिए, ये देखो आप, मैं दोबारा डालता हूं, ये है, ठीक है, ये मैं मोबाइल नंबर, ये इसको मैं रन करता हूं, इस कोड सेल को, ये दिख रहा है आपको, ये कोड सेल, मैं इसको रन कर रहा हूं। आपको ये मेरे ऊपर ऊपर दिख रहा है, ये यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है, इंटर योर मोबाइल नंबर, प्रेस एंटर टू कंफर्म और एस्केप टू कैंसिल। ये दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? ये यस यस। मैं यहीं पे हाँ हाँ डाल, दिख रहा है। कुछ भी मैं डाल दे रहा अच्छा हूँ हाँ आ गया सर, ये मेरे में भी आ गया। हाँ आ और गया। एंटर की प्रेस कर दे रहा हूँ। हाँ आ गया आ गया। ओके। फाइन। या आ गया। तो आपने जब मोबाइल नंबर डाला, और हम लोग सबको पता है कि मोबाइल नंबर इज ए इंटीजर डेटा, it's not all it's also not a floating point, it's an integer data, but I am getting the type as str, string data. Why I am getting type as str? Because input function will always return a string as output. अभी क्या है, so even if you enter a number, it will give you, it will return as a string that we have studied. Now नेक्स्ट थिंग क्या आता है, कंसेप्ट आता है टी वाई टी, टाइप सी एस टी आई एन जी, टाइप कास्टिंग। अब ये टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग का मतलब होता है, टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ डेटा, वन टाइप ऑफ डेटा टू
another data type. This is called typecasting. जब हम एक डेटा टाइप को अगर दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं टाइपकास्टिंग। अभी अभी मैं यहां देख रहा हूं कि ये मेरा मोबाइल नंबर स्ट्रिंग तो हो नहीं सकता है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इंटीजर डेटा होगा। तो मैं अगर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, टाइपकास्टिंग यूज करना पड़ेगा। सो लेट्स यूज टाइपकास्टिंग कन्वर्टिंग, लेट्स राइट कन्वर्टिंग मैं स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग्स टू पहले इंटीजर करते हैं, स्ट्रिंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स अगर मुझे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए लेट्स से कि ये मेरा डेटा है, ठीक है। लेट्स टेक दिस इंटायर थिंग, लेट्स टेक दिस इंटायर थिंग। अभी इनपुट फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वैल्यू वो स्ट्रिंग डेटा रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहां पे इसको ये कर दूं, ये इंट लिख दूं, लेट्स इफ आई राइट दिस एज एन इंट, INT इंट अगर मैं लिख देता हूं तो व्हाट इट विल डू, जो भी ये मोबाइल नंबर ये स्ट्रिंग डेटा होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में। इसको ही कहते हैं हम लोग टाइपकास्ट। अब इस कोड को हम दोबारा मैं रन करता हूं। अभी मेरे को मांग रहा है मोबाइल नंबर, लेट्स पुट सम मोबाइल नंबर हियर, फाइन, एंड लेट्स प्लेस एंटर की। एंड नाउ मैं चेक कर रहा हूं टाइप ऑफ इनपुट मोबाइल नंबर, इनपुट अंडरस्कोर मोबाइल नंबर। कैन यू सी नाउ, अर्लियर आई वॉज गेटिंग, जब मैं टाइप चेक कर रहा था यहाँ पे इनपुट मोबाइल नंबर मेरे को क्या मिल रहा था, STR मिल रहा था, स्ट्रिंग। यहां मुझे इंटीजर मिल रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दिया, मतलब एक डेटा स्ट्रिंग डेटा को मैंने इंटीजर डेटा में कन्वर्ट कर लिया। एंड फॉर कन्वर्टिंग द स्ट्रिंग डेटा इनटू इंटीजर डेटा मेरे को INT लगाना होता है उससे पहले। समझ में आया? इसको हम लोग कहते हैं टाइप कास्टिंग। ये मैंने यहां पे क्या किया, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर, स्ट्रिंग को इंटीजर्स में कन्वर्ट किया। अभी मैं स्ट्रिंग को फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकता। अगर मैं इसी इसी चीज को लेट से फ्लोट में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां इंट के जगह इंट को हटा के FLOAT फ्लोट लगाना होगा। अगर मैं इसको फ्लोट लिख दूं तो ये क्या करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेगा। लेट्स टेक इट अगेन, लेट्स राइट समथिंग, फाइन, लेट्स प्लेस एंटर की। एंड नाउ चेक टाइप ऑफ इनपुट मोबाइल नंबर। कैन यू सी, अब मेरा ये डेटा टाइप क्या आ रहा है, फ्लोट डेटा। तो यहां मैंने क्या किया, स्ट्रिंग डेटा को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका, अब क्या है, अगर मेरे पास कोई नंबर्स है उसको मैं कैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूं। लेट्स से कि कन्वर्टिंग, यहां लेट्स राइट हियर, here I was doing converting strings to integers, here I was doing string to float. Now let's see if I want to do if I want to convert some data, like let's take that one variable, and inside that variable let's first, I am trying to, let's first convert what, string to int. Easy.
अभी लेट्स से कि क्या करते हैं, मैं ये कर रहा हूं कि आई एम टेकिंग वन वेरिएबल var1 and I want to input enter your name. मैं ये आपका नाम इंटर करना चाहिए, इंटर योर नेम, फाइन। ये मैं एंटर पूछ रहा हूं और इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, एक स्ट्रिंग डेटा होगा। पहले हम इसको कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट रन दिस एंड नेम मैंने एंटर कर दिया अपना नाम ANUP अनु। अभी मैं टाइप चेक कर रहा हूं, तो टाइप अगर चेक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट मुझे पता है कि इट ऑलवेज गिव्स स्ट्रिंग डेटा टाइप, तो ये स्ट्रिंग ही मुझे मिलने वाला है, करेक्ट। अभी जो मैंने यहाँ इनपुट किया और जो मैंने इनपुट किया था डेटा, वो क्या इनपुट किया था, अनु ANUP, करेक्ट। अगर मैं देखना चाहूं तो मुझे दिख भी जाएगा var1 के अंदर क्या है, var1 के अंदर मेरा ये डेटा स्टोर है, दिस डेटा एंड दिस इज अ स्ट्रिंग डेटा। नाउ लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट दिस into int. This is a typecasting var1 and see what I am getting. I am getting invalid literal for a string with base 10। क्योंकि आप ये सोच के देखो कि क्या इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में, क्या नहीं, बिकॉज इट्स कंप्लीटली कैरेक्टर, और कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट, कैरेक्टर को हम इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दिस एरर। सिमिलरली अगर मैं इसको फ्लोट में भी कन्वर्ट करना चाहूं तो ये नहीं होगा। तो अगर मैं FLOAT फ्लोट लिखूं और मैं अगर ये वेरिएबल डाल दूं इसके अंदर तो मुझे एरर मिलेगा। तो यू शुड remain conscious when typecasting is not possible. So typecasting will fail if the input cannot be converted into the desired output or desired data types. Fine, because you have seen. So basically what typecasting is, that you are giving your data type a new costume. You are typecasting it, na? You are giving your variables a new costume so they can play a different role. Earlier they are playing the role of, let's say, string. Now they are playing a role of integer. So it's a role shifting game. But what happens? Not all costumes fit into every one of us. So when that costume do not fit, we get an error. So that's why here we are getting an error. So hope this is clear to you. Am I getting quick yes or no? Or quick thumbs up so that I can understand everything is going well at your end? Fine. Now, the next thing is comments and documentation. These are very, very simple things we are discussing right now. Slowly and progressively we will move ahead. Comments, 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 and documentation. Documentation. What comments and documentation means? So first, let's understand this comment. See, we already are using this comment. This is called has. This has, when you, this has is used for single line commenting. Why this has is used for single line commenting? See here, in any one of the above example, wherever we are writing this has, that means when we are running this code, the code is skipping this line. It is not considering this line as a part of its execution. It is only considering this line. Fine.
So this is a comment. This is a comment. These all are comments that we are putting inside our code. That's why the comment is not getting executed. Here, if you see, this is my comment. This line also is my comment, and this line is also my comment. So this single has is used for commenting, and this is a single line commenting. It can comment on only single line. If you put a has before any line, that line will not get executed when you run the code. Is this fine? So this is a simple thing. Comment, this is single line commenting. We already are doing it, but we have to study this. So this has is a basically, this is a single line comment. Line COMME. Got my point? Now, if for your understanding, I'm doing this. Let's say if I write print hello, and if I run this, can you see inside this code cell, there are three lines, this line, and this line. If I run this, only this line get executed. Our interpreter or this thing is skipping these two lines because it understands that this is a comment part. Now this is about the single line comment. Now one thing is that there is a shortcut. It is not needed that every time you choose this hash. There is a shortcut for this. I'm giving you this shortcut for Windows. I'm writing it here. Shortcut. You can try it out. For Windows के लिए shortcut है. This is Control CTRL plus and this is this forward slash. Fine. And for Mac, this is true for Windows and Linux. And for Mac, this is instead of this control, in CMD comes CMD plus ये backslash. Sorry, not question mark, this backslash. Forward slash, sorry. So this is a shortcut. If you use this shortcut, you can able to put likewise. Let's say if I'm using this shortcut, this plus this, I'm getting this hash. If I will use second time, it will get removed. So you can use this shortcut. Fine. Now, this is a single line comment. Now there is a thing called multi-line comments. What is this multi-line comments? For putting a multi-line comments, what you used to do, we used to put the multi-line comments inside the triple quotation. This is my triple quotation, and this is my triple quotation. So inside this two triple quotation, I can put anything what I want. Just let me, this is a multi-line comment. I am good. How are you sleeping, people in the coding session? So this is a multi-line comment. If I just put triple quotation above and triple quotation below, and whatever thing you will write inside these two triple quotation, compiler treats this as a multi-line comment. And we use this often inside this code to improve the readability of the code. Correct?
Now this is a double quotation. You can also put single quotation. Single quotation is also fine. You can use both. You can use either. Let's put single quotation inside this instead of this double quotation. So if I put this single quotation instead of this double quotation, this is also fine. So both works the same way. Fine. So now custom fine. Now there is something called docstring. Yes, docstring. Now something called docstring. These are the terms that you should be familiar with. That's why I'm writing this. So whenever in modular programming and whenever we do actual programming, what happens is that we used to put comments inside my functions or inside my class or inside wherever we want. This we used to do to improve the readability of the code. So that let's say today you are writing some software code or you are writing some application. After maybe few years, some other developer or someone else, if try to go through that code, it is easy for him to understand everything in a very easy way if you put the comments. So this is a very good programming practice to put the comments. So docstring are, what is this docstring? Docstring are, let me write, docstring are special, you can write, comments used to describe the purpose of a function or class. So we will study function later on, but let's just for giving you an idea, let's write one function def, and the name of this function is greet. Let's say greet. Fine. This is my function, and inside this function I want to do something. So it would be good if I put a comment inside this. So this is how we put comment inside this function. So we will use triple quotation. Inside this, we can put our comments, whatever comments we want to put. Let's put this function greets the user. Fine. This is a comment I have given. And then finally, inside this function, I want to print Namaskaram. Namaskaram. Fine. So what this function will do, this function is doing a greeting called Namaskaram. And this describes this body, this is called docstring. The docstring describes what this function is going to perform. So this is how we use. So docstring is simply like the biography of a function. You can describe what this function or what the modules or what the class you are using is going to do, perform what tasks. तो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग करने वाले स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन. सो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होता है? स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होता है व्हेन वी ज्वाइन टू और मोर स्ट्रिंग्स. दैट इज कॉन्कैटिनेशन मींस, so there are several ways to concatenate the string. The one of the simplest way to concatenate the string is using plus operator. This we can use to join the string. Let's say I want to concatenate two string. So let's write first underscore name. And the first name is, let's say I'm writing Hirak. Fine. And the second name,
and let's write last underscore name. And last underscore name is like money, N-A-N-I, money. So these are my two strings, correct? Now I want to concatenate this string and want a full name. So let's create one variable and full underscore name. If I create the first variable, this variable, inside this variable, I want to add these two names. First name, my first name, plus my last name, last underscore name. If I write this and if I run this code, let's see what I'm getting. And then at the end of this, वाला समझ नहीं आ रहा सर. ओके, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है. और किसी को नहीं समझ में आ रहा है? एनीवन एल्स? ठीक. ये मैंने बोला है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन. ओके, यहां से okay. ठीक है, ये देखो मैंने क्या बोला है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन. स्ट्रिंग क्या है? मैंने एक नाम लिखा, एक वेरिएबल क्रिएट किया, फर्स्ट नेम इज माय वेरिएबल, और इस वेरिएबल के अंदर क्या है, व्हाट इज इनसाइड दिस वेरिएबल? आई हैव पुट वन स्ट्रिंग बाय द नेम हीरक. एंड मैंने एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया, लास्ट नेम. उस वेरिएबल के अंदर मैंने एक दूसरा स्ट्रिंग डाला, मनी. नाउ आई वांट टू ज्वाइन दीज टू स्ट्रिंग. स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन मींस ज्वाइनिंग two or more strings. That is called string concatenation. For that we use this plus symbol. By using this plus, so here I am writing the first name, then I am writing this plus, and then I am writing this last name. Have you understood this now, Divya? समझ में आया दिव्या आपको? Yes, sir. आ गया? आ गया. ठीक है. तो अभी देखते हैं हम लोग, अगर मैं इसको रन करता हूं और मैं यहां प्रिंट करा रहा हूं फुल नेम, अगर मैं इसको रन करता हूं तो सी क्या आ गया, हीरक मनी. इज इट फाइन टिल हियर? इज दिस फाइन टिल हियर? नाउ एक दिक्कत इसमें क्या है कि मैं चाहता हूं कि ये मेरा जो हीरक और मनी के बीच में स्पेस आए. तो मुझे, अगर मैं चाहता हूं कि स्पेस आए, तो आई नीड टू ऐड स्पेस हियर. तो मैं क्या करूंगा, प्लस के बाद ये एक स्पेस ऐड कर दूंगा. दिस इज अ स्पेस, वन स्पेस, देन आई विल ऐड प्लस हियर. इफ आई डू दिस, तो ये क्या होगा, पहला मेरा नेम आएगा हीरक, देन this thing will take one space, then will come this last name. Now run this and see what I am getting. Can you see the difference? Here I was not getting any space in between. Here I am getting one space. So have you understood how I have concatenated this two string, or how I have added the two string? Yeah. So you can, this plus operator that we are using is just, this is an addition operator. So here we are using this plus operator for the purpose of concatenation. Fine. So this is it acts like a glue, where it is adding few pieces of strings together. Fine. Now this was a plus operator. Now there is another operator. Let me explain you about this operator. This operator is called plus
equal to operator. All right, let me write it here, using plus equal to operator. Now, how we can use to what this plus equal to operator means? Let me explain you this. Let's say if I write plus equal to, if I write a plus equal to, sorry, if I write, actually I am face, my tab is, if I write a plus equal to, let's say b, fine. What it means? This means a equal to a plus b. If I write a minus equal to b, this means a equal to a minus b. So this is how plus equal to or minus equal to operator works. So plus equal to operator appends a string to another string. It is a shorthand of this, short form of this. Fine. So let's say, let's take the same string here and let's try to use this plus equal to operator. So I am writing first underscore name, and my first underscore name is, let's not write it, just copy. I am copying this entire thing from here and pasting it here. And this time, instead of this, I am using plus equal to operator. So what I am writing, this is my first name, fine, and this is my second name. So let's say if my first name is Hirak, so here I am writing let's do one thing. Full underscore name is Hirak, and here I am writing full underscore name, copy, let's write money plus equal to money. So if I run, oh sorry, unexpected indent, fine. If I run this, I'm getting this thing. Can you see the use of this? Now, if I want to put a gap, I can simply either I can put a space here. If I will put a space and run here, I will see there's a space I will get. Either I can put space here or I can also put space here. If I run this, I will get the same thing. If I will not put this, then I will get no space. So you can do either of the two. Both are fine. So using this plus equal to operator, we can also concatenate two or more strings. The third way to concatenate a string is using join operation. Using join to concatenate, join method. This is basically method to concatenate. So how we can use join method? So let's say, let's write it as, there is one variable I am creating, words, words. And inside, and let's say inside a list, I am writing something, few words, Python
is fun learning. Fine. Fine. Let's say this is my list of 4 words. Fine. And I want to join them. So how I can join them? To form a, let's say, sentence. I want to form a sentence. So let's take one variable. And inside this variable, I am writing words dot join and sorry, not inside this. I simply put this thing because I want to put this space. Then I will write join and which I want to join this words. So put words here. If I simply and then if I print this sentence, print sentence SENTENSE, what will happen? If I run this, let's say Python is fun learning. Why this is showing me fun learning? Because I have not put this thing. Fine. So again run it. I am getting Python is fun learning. So I'm using this as one space, then dot join, and I want to join these 4 items inside the string, and here I want to print it. So this is how we can also join. So this is a third way of joining this string. Is this fine? Now the next thing is string formatting. This is very, it's related to string only. That's why I am discussing string formatting. What is this string formatting? So string formatting allows us to create a more complex strings by embedding the variables and expressions inside the string. So there are several types of string formatting. One type that is a very old type of string formatting that is now not used anymore nowadays. But if you see some Python code in previous versions, so there you will find it. But so I will just discuss it. So using the percentage, this is operator. So how you can use this? Let's take a name and let's take the name as Lokesh. Fine. I'm taking the name as Lokesh and let's take the age as age is equal to 24. Fine. Now, I am taking one variable formatted underscore string is my variable. Inside this string, I am writing something. Let's say my name is percent S and I am, let's say, percent D years old. Fine. After that, I am writing this thing old percent and thereafter let's write name comma age. If I write this and let's print this, print formatted string, and let's run this code and see what I'm getting. So let me explain you this here, how this is working. See, I have written a string. This whole thing inside this double quotation, this whole part inside this double quotation. And here I have written one variable outside it and I have assigned
variable as location and age as 25. Now inside this, for using the string data, I'm using for string I'm using %s, and for integer I'm using %d. And here at the end I'm writing %. And what is the first thing that I want to write? Name. So that's why I'm putting it name here. And second thing, I want to put age. So that's why I'm putting age here. So it is taking my name is this %s refers to this name, and this %d refers to this age. So it is taking location and 25 years. Is there any confusion till here? Fine. So everything fine. Now see what this is the one way of formatting the string. Now let's do the second way. I suppose you have understood this way. So this is the old method which we used to do in formatting this string. Now the current method that we actually, there are 2-3 methods. So we are going to discuss all of those in a while using the str dot format method. METHOD. How this method we are going to use it? Let's say, let's take one variable, name is equal to Gaurav. And let's take profession. Profession is equal to C. Fine. So these are the two variables I have taken. Then write formatted string as another variable, and there what I'm writing hello, comma, my name is, I'm putting this curly bracket here, and thereafter I'm putting, and I am my name is this, and I am a curly bracket second. Fine. Thereafter write format format, and after format let's write name variable, comma, profession. Fine. So this is, now if I will run this, if I will print this thing, formatted variable, formatted string, not variable, formatted string. And if I will run this code, I am getting this, hello, my name is Gaurav and I am a CA. Now try to understand this, what I have done here. See, inside this name variable, I have given Gaurav, and inside this profession, I am given CA. Now the formatted string, inside this formatted string, whatever thing variables I want to put it, I will put this bracket, this curly bracket at the place of putting the variables. Or here dot format, here we are giving the things in a sequence in which I want to put a variable. मतलब मैं पहले, मुझे यहाँ पे गौरव चाहिए या यहाँ पे मुझे नेम चाहिए, नेम वेरिएबल, तो मैं नेम को यहाँ पहले लिखा, फिर यहाँ पे मुझे प्रोफेशन चाहिए. अगर आप पढ़ते हो हेलो माय नेम इज गौरव, गौरव कौन सा वेरिएबल है, स्टोर किसमें है, नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर, तो नेम वेरिएबल मुझे पहले चाहिए, तो मैं यहाँ पे नेम वेरिएबल पहले लिख रहा हूं. फिर अगर मैं देखूं ये प्रोफेशन, तो ये मेरा कौन से वेरिएबल में स्टोर है, सॉरी सीए, ये कौन से वेरिएबल में स्टोर है, ये प्रोफेशन में है, तो यहां मुझे प्रोफेशन वेरिएबल चाहिए. तो
फर्स्ट हमारा पहले मुझे कौन सा वेरिएबल चाहिए, नेम चाहिए फर्स्ट, सेकंड मुझे कौन सा वेरिएबल चाहिए यहाँ, प्रोफेशन। तो मैं उसी ऑर्डर में यहां लिख दिया, नेम लिख दिया, सेकंड ये लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर को चेंज कर दूं तो ये लिखा हुआ चीज भी चेंज हो जाएगा, ये सीए यहां आ जाएगा और गौरव यहां चला जाएगा। उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो ये एक बार ये हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूं, सेम चीज कर रहा हूं, इसको ले लेता हूं, सारी चीजें एवरीथिंग विल रिमेन सेम, और मैं इसको यहां पेस्ट कर देता हूं, और यहां पे जस्ट मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूं, कॉमा, यहां मैं प्रोफेशन लिख देता हूं, PROFESSION, और यहां से मैं प्रोफेशन हटा देता हूं। लेट्स जस्ट रिमूव इट फ्रॉम हियर, फाइन। अब मैं देखता हूं कि ये क्या होता है। अगर मैं इसको अब रन करूं, देखो अभी क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है, माई नेम इज सीए एंड आई एम अ गौरव। बिकॉज वाई इट इज कमिंग, बिकॉज मैंने प्रोफेशन को पहले रखा है, तो ये वाला जगह ले रहा है, एंड मैं नेम को बाद में लिखा हूं, तो ये वाला कर्ली ब्रैकेट का स्पेस ले रहा है। इज दिस फाइन? तो अब इसके बाद आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे ज्यादा मॉडर्न पाइथन में, अभी लेटेस्ट पाइथन में यूज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं यूजिंग एफ स्ट्रिंग, यूजिंग एफ स्ट्रिंग्स। इसको हम लोग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स। हाँ, अब ये कैसे काम करता है, ये बेसिकली पाइथन 3.6 में इंट्रोड्यूस किया गया था, स्ट्रिंग वेरिएबल्स, फाइन। अभी मैं एक वेरिएबल लेता हूं, लेट्स से वेरिएबल का नाम है नेम, एंड इस वेरिएबल में मैं लिखता हूं राकेश, फाइन। एंड दूसरा मैं वेरिएबल लिखता हूं हॉबी, एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूं मेडिटेशन, फाइन। ये हमारा दो वेरिएबल्स हो गया। अब मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, एक मैं वेरिएबल ले लेता हूं, लेट्स टेक वन वेरिएबल फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं लिखता हूं एफ। ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल हमेशा एफ से स्टार्ट होता है। इसके बाद मेरे को ये डबल ये लगाना है, ठीक है। ये देखो आप, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन कोई भी आप यूज कर सकते हैं, डबल डबल कोटेशन और सिंगल डबल कोटेशन ये यूज कर सकते हैं। तो मैंने डबल कोटेशन लिया, लेट से मैं लिख रहा हूं माय नेम इज, और फिर मैं ये क्या लिख रहा हूं, यहां पे मैं नेम वेरिएबल डाल रहा हूं, एंड माय एंड आई लव, हेलो, वी लव, और मैं एक यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल रहा हूं, और मैं यहां दे रहा हूं यहाँ पे हॉबी, HOBBY हॉबी, फाइन। अब यहाँ पे मुझे कुछ भी और डालने की जरूरत नहीं है। मैं इसको प्रिंट कराना चाह रहा हूं, लेट्स प्रिंट इट। प्रिंट क्या लिखूंगा, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। अभी मैं बताता हूं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। अभी मैंने एक वेरिएबल लिया नेम, जिसके अंदर मैंने राकेश रखा, हॉबी मैंने ये रख दिया। अब एफ स्ट्रिंग में ये चक्कर खत्म हो जाता है। यहां पे क्या है कि यहां पे आप जो भी चीजें असाइन करोगे, यहां ऑर्डर डजंट मैटर। जैसे कि पहले ऑर्डर मैटर कर रहा था, यहां ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। आप अगर यहां नेम लिखोगे तो दिस वेरिएबल विल टेक द वैल्यू हियर। अगर आप यहां पे हॉबी लिख रहे हो तो ये वेरिएबल अपना वैल्यू यहां पे पुट कर। इफ यू चेंज इट, अगर आप यहां हॉबी लिखते हो तो दिस वैल्यू विल कम हियर, अगर आप यहां नेम लिखते हो तो दिस वैल्यू विल कम हियर। अगर आप दो बार लिखते हो तो जितनी बार लिखते हो वहां वहां वो वेरिएबल अपना स्पेस जगह ले लेगा। दिस इज हाउ फॉर्मेटेड एफ स्ट्रिंग वर्क्स।
अगर मैं इसको रन करता हूं तो मेरे को क्या आउटपुट मिलेगा? माई नेम इज राकेश एंड आई लव मेडिटेशन। इट्स वेरी सिंपल थिंग, आई सपोज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अनूप सर, जी सर, इट्स uh, ठीक है। this is a reminder call. हाँ ठीक है, आई आई गॉट इट। अभी सर मेरे को रिमाइंडर दे रहे थे, तो आई विल फिनिश दिस सेशन इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। तो जस्ट अभी कुछ चीजें हैं वो मैं अभी कवर कर लेता हूँ इन फ्यू मिनट्स। अभी एक लास्ट में आता है, एक चीजें है फॉर्मेटिंग नंबर्स। नंबर्स ये फॉर्मेटिंग नंबर्स क्या है? ये इतना ज्यादा आपको दिखेगा नहीं इसका इतना इजली, बट लेट्स डिस्कस इट। लेट्स से आप सबको पाई पता होगा, एंड पाई की वैल्यू किसी को पता है क्या है? नॉट डिटरमिन्ड है। 22/7। 22/7 है, बट एक्चुअली वो 22/7 हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं। अगर मैं डेसिमल टर्म से 3.47 3.141 और लेट्स से 592, लेट्स पुट एनीथिंग, कुछ इस तरह का वैल्यू मिलेगा जो डिटरमिन नहीं है। एंड मैं चाहता हूं कि लेट्स से, एंड ये कंटिन्यू है क्योंकि डिफाइन नहीं है, ठीक है। एंड वी फॉर आवर कन्वीनियंस हम उसको एज अप्रोक्सीमेशन 22/7 ले लेते हैं। अभी मुझे 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही चाहिए, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? फॉर्मेटेड, लेट्स राइट पाई इज इक्वल टू एक्स स्ट्रिंग। इनसाइड दिस एक्स स्ट्रिंग pi to 3 decimal places, और लेट्स राइट। इसके बाद में यहां पे ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहां पे? आफ्टर दिस आई विल पुट दिस कर्ली ब्रैकेट एंड पाई, एंड देन मैं कोलन दूंगा और 3f लिखूंगा, डॉट 3f। दैट मीन्स मैं इसको ये बता रहा हूं कि सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू को लेना है। देन इफ आई राइट प्रिंट, और मैं अगर फॉर्मेटेड करता हूं एंड इसको रन करता हूं कोड को, 5 to 3 decimal places is 3.14. It's a round up, Anup sir, or round down? It's a round up value till 3 decimal places. If this value become 1.1415, whose value is this echoing? Kindly give yourself first. I don't know who is echoing. Kindly mute yourself. Hello? Yes sir, कहिए। Again it's echo. अभी ठीक है सर। Okay. I am asking that if the value of pi is 3.1414, 1414. Okay. Correct. Now, shall I delete these values? Yes. No. Okay. Then further values is okay. That's not an issue. I am putting any random values. Any random number. So what will be the formatted pi now? It is rounding. It is rounding, nearest rounding, no? Earlier it was 5 here. Correct. So it is the nearest rounding. We are getting 1 here. How it is? Earlier giving us 142, because the value was 45. Correct. So Correct. it's giving me the rounded value, no? Correct, sir. It is giving the rounded value till 3 decimal. And if I increase it, let's say 5, then it
go up to the fourth value, fifth. Then it is, It will now do it is giving me till, it will do the rounding from the fifth value. is this Am fine? I right? Am I right, sir? Yes, sir. Yes, sir. And one last thing, just a 1 minute thing. So you have understood this thing. Now one last thing of adding comma. Adding comma. Comma. So how can I add commas? Let's say I am taking one variable, and this variable is large underscore number. Let's say this is my variable, and inside this variable, I'm putting some 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, some values, some random values. I want to write this formatted. Let's write one variable formatted underscore number. If I want to write this formatted underscore number and this F string, then let's say the number is, and let's say if I want to put the comma between these numbers, between these large numbers, so what I will write inside this curly bracket, I will write first this number, large number, RDRG, large number, and thereafter I will put this colon, and thereafter I will put comma. Now, if I will run this code and print and formatted number, formatted number, let's put this and run this, see what I am getting. Can you see? Automatically it is Converted into the money format now. International money format. yes, automatically it is adding the comma after 3 zeros. Let's remove 1 zero from here, or let's add one more zero here, and now run it. Can you see? It started putting comma after 3 zeros from the right, and this is only till after 2 places. So this way it will keep on doing. Anup sir, means it automatically detects this format is the uh, money type of data or what? So this, Automatically yes, it detect because it is ingrained inside this abstring thing. See, here we are putting large underscore number, comma. So it will automatically detect 3 places, after 3 zeros, it is putting it. Fine. Okay. So If I write Hirakmani Tiwari instead of this 10000, then where the comma will be So added? let's do it. Let's see what I'm getting. If you write instead of this, what you say, you want to write Hirak Mani Tiwari. Correct? This is what you want. Correct. So let's run it and see what I'm getting. So I'm getting error. Why I'm getting error? Because this is only for the numbers. Fine. Okay. This is only true for the integers or floating point numbers. Cannot specify this with S. Fine. So this is what formatted number, this thing. So for that, Is there any time format in Python? yes, sir, that everything is there. So I am just going in a sequence. So it will definitely come, and I'm definitely going to cover those things. So slowly, it's we are taking baby steps and moving. Okay. So is any doubt in today's session, guys?
Not currently, sir. Fine. So let's just stop. I'm stopping the sharing of my screen and stop sharing. Fine. Fine. So let's see what we have learned today. So today we explored various methods for concatenating and formatting strings in Python. And these techniques will help you to create dynamic and readable text in your programs. So you can practice these methods and see how they can help you make your code more expressive, correct? So in the next session, we will meet with certain advanced things. So that's all for the today. Let's meet in the next session. Thanks for joining. And if you guys have any doubts, you can definitely ask me questions. If you want to stay and ask any doubt, you can stay. I'm going to end the session. I'm going to stop the session right now. If anyone have any doubt, you can stay. Otherwise, you can quit the meeting. Thanks for coming. See you in the next session. And one more thing, one important announcement. You guys, all of you who are present here, whatsoever be your feedback, it's either be positive or negative. Do share your feedback, because with the help of the feedback, I can enhance your learning experience. Until unless I don't know how you want the things to be done, what are the issues that you are facing, I'm not able to help you out. So feedback is very important for me. So definitely do share your feedback. It doesn't matter. Whatever feedback you want to give, you can give it. Fine. Thanks for coming.